Now we can continue with the proceedings. I would first like to introduce our esteemed panelists today. Panelist number one, Mr. C.H. Narasimha Rao, Chief General Manager, State Bank of India, Bhubaneswar Circle. Our second panelist today is Mr. K.K. Gupta, Chief General Manager, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, Bhubaneswar. Third esteemed panelist is Mr. Vijay Kumar Bhoi, Regional Director, Reserve Bank of India, Bhubaneswar. The most important attraction of the evening, Mr. Harun Rashid Khan. I would love to introduce him in Korea. Sri Harun Rashid Khan, 29 July 1954 रे पुरी जिल्लार काकटपुर ब्लॉक अंतर्गत लताहरण गाँव जनाशुना समाजसेवी श्री अब्दुल जलील खान घरे जन्मग्रहण करते। जेजेबापा श्री करीम बख्श खान जड़े स्वाधीनता संग्रामी जे कि कुहुड़ी लवण सत्याग्रह में भाग नहीं। भुवनेश्वर स्थित बड़गढ़ हाईस्कल को मैट्रिक पास करी बीजेपी कॉलेज और पर उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करते। दिल्ली स्थित जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज रु एमफिल पढ़ा शेष करी 1978 मसीह से भारतीय रिजर्व बैंक रे प्रोबेशनरी अधिकारी रूपे नियुक्त पाइथिले। 1978 रु आरंभ करी से रिजर्व बैंक रो विभिन्न विभाग और शाखा भिन्न भिन्न पदवी रे कार्य करिसथि। ओडिशा राज्य आर्थिक निगम ओएसएफसी रो से नोमिनी निर्देशक थिले। तबे तांकर एक विशेष परिचय हला जैसे ग्रामीण ऋण एवं माइक्रो फाइनेंस, रूरल क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो जो कमिटी थिला से कमिटी से अध्यक्ष थिले जहाँकि खान कमिटी नाम रे सुपरिचित। आज बैंकिंग सुविधार प्रसार पाई जो बिजनेस फैसिलिटेटर बा बिजनेस करेस्पोंडेंट नाम रे नुआ व्यवस्था प्रचलन करा जाउची श्री खान एवं से खान कर से कमिटी ही ताकू सुपारिश करते। आज वित्तीय अंतर्भुक्तिकरण बा फाइनेंशियल इंक्लूजन विषय आज जो आम विषय रखी आलोचना करने श्री खान का छड़ा आउ कहीं द्वितीय व्यक्ति देश में नहीं जे कि ये सब्जेक्ट भाषण देवाई योग्य व्यक्ति हम। आज श्री खान वर्तमान किसी गत मासरे भारतीय रिजर्व बैंक डेप्यूटी गवर्नर पदवी रे नियुक्त होइछन्ति। श्री खान पूर्व स्विट्जरलैंड स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स अंतर्जातीय वित्तीय व्यवस्था कमिटी और G20 कार्यकारी कमिटी भारत प्रतिनिधि रूपे देशर प्रतिनिधि रूपे कार्य करते। वर्तमान डेप्यूटी गवर्नर हिसाब से से विदेशी मुद्रा बाह्य निवेश आदि विभाग दायित्व ग्रहण करछन्ति। सर, वी वेलकम यू टू दिस गैदरिंग। नाउ आई विल रिक्वेस्ट द चेयरमैन ऑफ ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, एडिटर संवाद आम परिवार मुख्य श्री सौम्यरंजन पट्टनायक को ओडिशार यही सफल पुरुष को ये सफल कहानी नायक को हारून रशीद खान को सम्मानित करेंगे। अपन जानती वित्तीय अंतर्भुक्तिकरण बा संपूर्ण वित्तीय अंतर्भुक्तिकरण पथरे ओडिशा केते बाट आसी आगे से विषय आलोचना करने आज संध्यार आलोचना चक्र टुवर्ड्स टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ओडिशा ये कार्यक्रम को परिचालना करने मुझे अध्यक्ष श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक को अनुरोध करुच्ची कार्यक्रम आज संध्यार आम समस्त मुख्य आकर्षण एवं ए कार्यक्रम केंद्रबिंदु जहाँ को यही मात्र आम संबर्धना देवार गौरव अर्जन कलु श्रीयुक्त खान एवं तांको सहित जो माने आज मंचासीन होती एवं ए सभार ए संगोष्ठीर मर्यादा वृद्धि करिसेंती श्रीयुक्त गुप्ता, श्रीयुक्त राव, श्रीयुक्त भोई एवं मोर सहयोगी मोनिका नायर पट्टनायक एवं आपण माने जो माने आपणकर सदैव उपस्थिति जोगु आमर ए कार्यक्रम मर्यादा एवं गौरव वृद्धि करिसेंती समस्त को मु नमस्कार करुछि। आई बिलीव बैंकर्स आर द न्यू मास्टर्स। आई बिलीव bankers should become the friend, philosopher and guide.
Unfortunately, what happened during Harshad Mehta's great episode changed all over the country, and today we are entering into a new era. But here today, I would like to share my thoughts with you on a different occasion. आमे ओडिशा रे आज अत्यंत गर्व अनुभव करुछु। ओडिशा रे अनेक सफल कहानी अछि। ओडिशा रे अनेक सफल कहानी मध्य रे आमे साहित्य रे अनेक सफलता हासिल करथिलु। ज्ञानपीठ पुरस्कार आउ जेकोसी पुरस्कार आम साहित्य रे अछि। ओडिशा रो लोक संख्या तुलना रे आम पुरस्कार ताठारु यथेष्ट अधिक। कहा जाउथला ओडिशा रो लोक संख्या तुलना रे आईएएस रे आम पिला माने यथेष्ट अधिक संख्या रे सफल होइचंती। ओडिशार कलाकार, ओडिशार संगीतज्ञ, ओडिशार बालुका शिल्पी सारा विश्व रे आदृत होइचंती एवं संवर्धित होइचंती। आज किंतु रिजर्व बैंक भली गोटे अनुष्ठान तांकर डेप्यूटी गवर्नर पदरे प्रथम थर पाई जने ओडिया एपरि एक पदवी पाइथिबा दृष्टिरु आमे जो माने साधारणतः गरीब ओडिशा रे गवर्नर, बैंक पुणी रिजर्व बैंक ए तीनोटी पदवी आमको बेस प्रभावित करे। कथा कथा रे कहती तो गवर्नर टा गलो एत कथा कहूचु। हियर वी हैव गॉट ए गवर्नर, ए रिजर्व बैंक गवर्नर एंड ए बैंक गवर्नर। तेणु सबुठारु बड़ बैंक, सबुठारु बड़ पदवी और सबुठारु बड़ कार्यक्रम से भली एक दायित्व संपन्न पदवी रे ओडिशार जणे व्यक्ति स्थानित होइथिबारु मु अत्यंत आनंदित। आम ओडिशा तरफरु, संवाद तरफरु एवं समग्र बैंकिंग फैटर्निटी तरफरु आमे ताकु संवर्धना देबा पई चाहू। ओडिशार एभली जणे प्रतिभा को निज अंचल रे पाई प्रथम थर पाई अनेक अनुष्ठान, अनेक व्यक्ति संवर्धना देबा पई चाहिचंती, किंतु संवर्धना श्रीयुक्त खान को दिया जाउ नै। संवर्धनार मान समान हेबार गोटे अभिप्राय। आज श्रीयुक्त खान को आमे संवर्धना दउछु माने तांको सहित सामूहिक भाव में समान हेबा पाई ये आमर अभिप्राय। The financial inclusion is very dear to his heart, and as banking people you all know how closely he has been monitoring and he has been involved in this whole process of financial inclusion. But I believe as a layman I don't know what his plans were, what his report says, and what is he doing to do to achieve total financial inclusion. But I believe if you are talking of inclusive growth, then inclusive growth is totally related to total financial inclusion. No area, no dream of inclusive growth will ever succeed without having to look at the total financial inclusion. एटा आम समस्त गोटे विराट बड़ आह्वान और चैलेंज। एवं मध्य आमे पाठ पढ़ला बेले मन करूँ बैंक जातीयकरण विषय जो रचना लिखुलु सेतबेले बैंक जातीयकरण कहीं है यही मनी लेंडर मान दाउर रक्षा करने, साधारण लोक मान पाखे बैंक सेवा पहुँचाइवाई एवं अर्थ एवं पुंजीर अभाव जेकोसी उद्योक्ता मान को नहब एक देवाई बैंक जातीयकरण है बोली कहुला। गोटे समय आसला बैंक जातीयकरण आम समस्त गोटे विराट बड़ संभावना है। एभली कि मु कहवाई चाहे ओडिशा रे जेतेबेले युवक मान भितर कौन आशा नथिला, कौन आकांक्षा नथिला, समस्ते भावुले सरकारी चाकरी छड़ा आउ किछि चाकरी नाही एवं जेतेबेले चाकरी संकोचन है बैंक जातीयकरण को मु गोटे विराट बड़ संभावना बोली देखिथिली। समस्त को मोर अंतर गभीरतम प्रदेश स्वागत करी ए समावेश सफलता कामना करी आपण मान को समस्त को धन्यवाद जणाई मोर वक्तव्य सांग करुच्ची। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीयुक्त खान। वर्तमान may I request Mr. Rao, CGM of State Bank of India, to make his brief presentation. Good evening, ladies and gentlemen. The financial inclusion as a concept is being practiced in our country right from many, many decades ago. One of the major events of financial inclusion is the very evolution of State Bank of India from the erstwhile Imperial Bank of India. The nationalization of Imperial Bank of India into State Bank of India in 1955, followed by the nationalization of the major banks in 69 and 80, are milestones
in the direction towards the total financial inclusion. That's a very, very significant step in the country's financial firmament, which has really taken the banking and the financial services from where they were confined to where they are today. There's a lot of progress. But today if we reflect back and see, have we achieved the total financial inclusion, we find that even after decades of these initiatives, we still have covered some ground, but there is a lot of ground which remains to be covered. Let me not preempt my other speakers by trying to cover the whole gamut of financial inclusion arena. I think, with this starting that I have given, my colleagues on the dais will be able to supplement on further things as they go along. Thank you very much. May I now request Mr. Gupta, the CGM of NABARD, Bhubaneswar, make his presentation. Friends, in India, we have been talking of the word financial inclusion ever since Rangarajan Committee was appointed to look into various aspects of financial exclusion, I would say. Government of India appointed this committee under the chairmanship of Dr. Rajan to look into as to what are the reasons towards large extent of financial exclusion and then what needs to be done. It was very well said by Rangarajan Committee in its report, and I say that I am fortunate to having been associated with initial deliberations and final report writing of this committee, that what is needed is not mere financial services extension to the people who have been excluded. What we need is financial services at affordable cost. Financial services, the cost of which can be borne by all those who are supposed to be included in the system of financial domain. 5 areas were basically focused upon by Rangarajan Committee. Number 1, right to have deposit accounts, affordable credit in time, remittances from one corner to the other of India, so that, as very rightly said by Mr. Rao, that a person working anywhere in the country should be able to remit part of his earnings to his parents or others living in his home village. So from one corner to another, affordable remittance systems, insurance services, and finally the pension services. These 5 areas were focused by Rangarajan Committee, and target was set then in 5 years period we should be able to do the job of including each and every one who is eligible for financial services to have access to financial services at affordable cost. A lot of initiatives were taken by Reserve Bank of India, and a series of circulars were rolled out by Reserve Bank, very clearly defining as to what is to be supposed to be done by banking community as a whole throughout the country. And initiative was taken with no-frills accounts, that let there be accounts which do not cost the account holder any money. No blockage of money, initial amount which is normally supposed to be held in savings accounts should be given and should be open, and everybody must have access to these accounts. Mr. Rao has raised the point of use of these accounts. It's a separate issue which has to be deliberated upon and see as to how we make it more and more useful. That in 5 years period we should be able to do that. I'm skeptic about it, that 5 years period from 2007-8 may not be achieved, but yes, we are on the path,
and I hope that path would be achieved by contributions, collaborations, and efforts of all of us here in the South. Thank you.